Yes, hello Suman, welcome on YourPedia platform and let's start your IC Engine Snap for your final HPCL interview. Suman, can you tell me about the fuel actually which suits IC engine? What kind of fuel is required for especially IC engine? Sir, IC engines are designed for fuel specific engines are, and their IC engine are two kinds, sir. The petrol engine and to be diesel engine. And sir, if we say about the properties of the fuel, then in case of sir petrol, the self ignition temperature should be high, sir, of the fuel, and sir for the diesel. You are aware about the use of biodiesel, biofuels in IC engines? Biofuels blending is done, sir. Blend में use करते हैं. Why not pure 100% biodiesel? What is the problem with that? Sir, maybe sir उनका self ignition temperature reach करने में problem है, sir. I don't know about that. You are not aware about problem associated with the biofuels? No, sir. ठीक है, ठीक है. तो आप मेरे को ये बताओ सुमन, what are the main differences between SI and CI engine? Sir, in SI engine based on the Otto cycle, and the CI is to be diesel cycle. And in SI engines, spark based ignition take place because the petrol have higher self ignition temperature. And in case of diesel engines, we use only compressed air is used first, and then the injection fuel system is used. And sir, SI engines are small capacity engines, and sir, diesel engines are to be as compared to large capacity engines. So in case of SI engine, the petrol used to have the compression ratio to be 6 to 10, sir. And in case of diesel engine, it to be 10 to 20, sir. When you heard about turbocharging? Yes, sir. Turbocharging used for mainly increasing the power of the engine, sir. And in this case, the exhaust gas is coming from the IC engine, which is used for running the turbine. And further turbine runs the compressor. Compressor supplies the combustion chamber compressed high density air to the combustion chamber. Sir, benefit of this is that proper combustion of fuel is to be take place inside the combustion chamber. And drawback is that, sir, due to the high pressure of the turbine, back pressure is generated of the turbocharging, that exhaust gas is come back to the combustion chamber, sir. And sir, there is a time lag between the processor, that's to be ignition processor. Sometimes the exhaust gas start the turbine, and then turbine runs the compressor, and compressor start supply the compressed air. Suman, Suman, supercharging or turbocharging we carry out for petrol diesel engine only, not for petrol engine. Yes, sir. Sir, in case of sorry, sir, I am not able to recall now. Petrol. सुमन, आप मेरे को ये बता सकते हो कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स क्या होते हैं? व्हाट आर एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स? Sir, air standard cycles are the Otto cycle on which the internal combustion engine works, sir. And there are certain assumptions on which air standard cycle works, sir. First one is to be air is the working fluid, and second one is sir, cycle is all the process in the cycle is to be reversible, and we assume that heat supplied to the engine is to be from constant reservoir from the external source we use, but in the reality this is
note then sir, internal combustion is to be take place. And so third one is there surrounding heat loss to the surrounding is assumed to be zero, sir. And CPCV value remain constant sir, during with no change with temperature. Acha, Suman, can you tell me something about the efficiency of petrol engine? On what factor the efficiency of petrol engine depends and how we can improve it? Sir, efficiency of the petrol engine depend upon first to be compression ratio, sir. Okay. Normally it's to be 6 to 10 to and 6 to 10 for the petrol engine. And sir, if we increase the high compression ratio, then efficiency is to be decreased, sir. So the detonation problem is there, sir. And second one is to be speed of the engine, sir. Okay. You heard about dissociation, Suman. What is dissociation and how it is going to affect the performance of IC engine? Sure. Dissociation, sir, take place at the high temperature and pressure, and fuel get disintegrated. The fuel molecule get disintegrated. Due to that, sir, some heat is absorbed from the combustion chamber. So the peak pressure we got, the value of peak pressure is to be decreased, sir. So due to that loss occurs, sir. Suman, knocking क्या होता है? What is knocking? Sir, knocking take place in diesel engine. And sir, first we compress the charge air in the combustion chamber. Then the fuel is injected inside the during the compression inside this cylinder, sir. Then first the charge is inducted that don't ignite first at the first stage, sir. When the second stage again fuel is injected, then sir there is a accumulation of fuel inside the cylinder combustion chamber. Due to that, sir, if self-ignition temperature of fuel is reached, then huge amount of energy is generated, sir, when combustion take place. Due to that, sir, Suman, you mentioned कि knocking takes place in diesel engines. So knocking क्या सिर्फ diesel में होती है? In petrol engine there is no such knocking happens. Sir, in petrol that's to be detonation, sir. Detonation. Achha, why the abnormal combustion in petrol engine is known as detonation? Sir, I think detonation means sharp sound that to be detected in petrol engine, sir. So it is easy to analyze knocking in petrol as compared to diesel. Yes, sir. Why? Sir, in case of diesel engine, vibration is always more, sir, because of high temperature and pressure. So by only sound we not recognize. ठीक है. सुमन, सीटेन नंबर क्या होता है? The CTN number is used for the fuel rating for the diesel, and is the mixture of sir alpha methyl naphthalene and the CTN, sir. If it's define the ignition delay of the diesel, sir. If for example, if there is a CTN number is 250, then percentage of volume of C10 in the fuel gives the same ignition delay as given by the fuel that having the same C10 number as of 50, sir. ठीक है. So, Suman, you are aware about the some of the developments in IC engine field? Yes, sir. Like especially about the injection system. How about MPFI? Yes, sir. Tell me brief about that. Sir, MPFI system is the replacement of carburetor in SI engine, and sir, this is the electronically controlled multi-point fuel injection system, which give equal amount of fuel to the multi-cylinder that to be used inside in case of multi-cylinder, sir, and according to the need of the engine and according to the load, sir.
ओके। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि 2 स्ट्रोक का जो थर्मल एफिशिएंसी होता है एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक, इट इज मोर और लेस? Yes, sir. I don't able to. The So there thermal is a, efficiency, the thermal efficiency and work output of 2 stroke in comparison to 4 stroke is what, like more or high? sir, in case of two-stroke engine, thermal efficiency is to be more, sir. थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक, ऐसा क्यों? Sir, thermal efficiency is to be less, sir, but power is to be more, sir. थर्मल एफिशिएंसी कम होता है, पावर आउटपुट ज्यादा होता है। Yes, sir. अच्छा, कम क्यों होता है थर्मल एफिशिएंसी? Sir, in case of as two-stroke, we don't provide the dedicated, sir, exhaust stroke. There is a squelching problem, sir. Due to that, loss occurs, sir. अच्छा सुनो, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज इंडिकेटेड पावर एंड हाउ वी मेजर इंडिकेटेड पावर ऑफ एन आईसी इंजन? Sir, indicated power is the power which we get at the piston head. The initial we get the fuel MF into series, the fuel power. From that, sir, losses occurs, that to be radiation loss and heat loss to the surrounding. And after that, we get the indicated power at the piston head. And next question is to be, sir. And it's we get from the PV diagram, sir, that to be indicated diagram. Heat load. चलो ठीक है सुमन, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ अभी। Yes, sir. देखो, वैसे तो आपका परफॉर्मेंस ठीक लग रहा है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ठीक है, डिलीवरी स्टाइल भी आपका धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है सुमन। आई थिंक दिस दिस इज सेकंड और थर्ड स्नैप विद मी, आई डोंट नो, Second, sir. बट आपने पहले इंटरेक्शन किया है तो हाँ, Yes, sir. आपका डिलीवरी स्टाइल भी इंप्रूव कर रहा है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग तो आपका अच्छा है, मैंने पहले भी आपसे इंटरेक्शन किया है, तो आपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चंस यू आंसर्ड करेक्टली। Yes, sir. तो टेक्निकल मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ये बायोडीजल के बारे में पढ़ के जाओ सुमन। ये जो Yes. एरियाज है ना, दीज आर यू नो वेरी मच रिलेटेड टू ऑयल एंड गैस सेक्टर। जैसे Okay, sir. B20 इंजन की हम बात करते हैं, B40 की बात करते हैं, B100 की बात करते हैं कि नाउअडेज वी आर लुकिंग फॉर सम अल्टरनेटिव फ्यूल्स फॉर आईसी इंजन। अब सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि आईसी इंजन के लिए फ्यूल का रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आईसी Yes, इंजन sir. के लिए आपको फ्यूल चाहिए कि जो अच्छे से मिक्स हो जाए एयर के साथ, वोलेटाइल होना चाहिए। फ्यूल कैसा होना Yes, sir. चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए। Volatile ओके, vaporization factor. Yes. और उसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी होने चाहिए, ठीक है, कोल्ड स्टार्टिंग इशू ना आए और कंपोनेंट्स को डैमेज ना करे। ओके, Yes, sir. और आपको पावर आउटपुट अच्छा मिले। तो Yes. बायोडीजल में ये है खासियत, बट बायोडीजल में मेजर प्रॉब्लम क्या है कि बायोडीजल में जो हार्ड स्टार्टिंग होता है, बायोडीजल में वोलेटिलिटी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल फ्यूल। बायोडीजल में कंबशन जो है वो ठीक है, आपके पोल्यूशन भी कम होगा, अल्टरनेटिव फ्यूल है, बट मेजर इशू क्या है इसके साथ? वोलेटिलिटी का। Yes, sir. तो आपको हीट अप करना पड़ता है, एंड दैट प्रॉब्लम इज देयर विद अल्कोहल्स आल्सो। थोड़ा देख के जाओ कि बायोडीजल बायोफ्यूल्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स है एंड हाउ वी आर टैकलिंग ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, और क्या स्कोप है। थोड़ा Yes. अल्टरनेटिव फ्यूल्स, जैसे आजकल हम मिथेनॉल इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में, Yes. 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग वी आर कैरिंग आउट, Yes, sir. एंड फर्दर आवर टारगेट इज टू मिक्स मोर देन 30% Yes, इन sir. नेक्स्ट 2-3 years ओनली। Yes, 2025 sir. 2025, sir. का टारगेट है हमारा 30% मिक्स करने का। तो उससे क्या फायदा हो रहा है? इफ यू आर गोइंग फॉर एचपीसीएल यू नीड टू नो अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब बाकी Yes, आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछे, बेसिक क्वेश्चन, टर्बो चार्जिंग, एमपीएफआई और जो भी एयर स्टैंडर्ड साइकिल रिलेटेड क्वेश्चन, नोकिंग, वो ठीक बताया आपने। एक्चुअल में डीजल में क्या होता है? हेट्रोजीनियस कंबशन होती है, तो डीजल में तो होता ही अब नॉर्मल yes, sir. हेट्रोजीनियस कंबशन है, हेट्रोजीनियस कंबशन होता है, तो लोकल कंबशन होता है एट वेरियस प्लेसेस, कोई सिंगल फ्लेम फ्रंट नहीं बनता, बट इन पेट्रोल इंजन सिंगल फ्लेम फ्रंट से कंबशन होता है। Are you getting someone? Homogeneous Yes, combustion होता है। That's yes, why sir. if some knocking abnormal combustion is taking place, that you can easily analyze in case of petrol Yes, engine. ठीक है, yes, ठीक है yes, सुमन, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आपका ठीक है, मेहनत करते रहो, गो फॉर सम मोर स्नैप्स इफ यू वांट, और yes. मेरे ख्याल से ठीक रहेगा आपका, डिलीवरी भी आपका इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। Okay, sir. गुड लक एंड Yes. बेस्ट लक फॉर योर फाइनल। Okay, sir. Thank you.